वेलकम बैक एवरीवन। हमने PLSQL में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। वी हैव लर्नड वेरिएबल्स, हाउ टू सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ कॉलम इन द वेरिएबल्स, how can we declare anchored type, that means how can we connect the variable of PLSQL with a column in your SQL. We can also connect a row of SQL in PLSQL by using percentage row type. Today we will be seeing another value of our PLSQL, which is the part of every programming language. That is, the first part which is of every programming language is your variable. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल होता है। वेरिएबल के साथ दूसरी कौन सी चीज़ होती है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल मीन्स व्हाट? वैल्यूज विच आर चेंजिंग। वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं वो क्या होती हैं? वेरिएबल्स। एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? दे आर द फिक्स्ड वैल्यूज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये दो क्वांटिटीज तो आपकी होगी ही। सो इन PLSQL कॉन्स्टेंट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? सेम जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? कांस्टेंट। बट वी हैव टू प्रिसीड द कांस्टेंट विथ द कीवर्ड कांस्टेंट. So constant name, after specifying the constant name you have to use the keyword constant, then after you have to specify the data type and the value. That means what? The variable which you are declaring as a constant must be having constant keyword associated with it. Whenever you will associate a constant keyword with a name, that name will become constant. But remember, when you are declaring a constant, it is compulsory to specify the value of that constant. So here I am declaring a constant named subject, and subject is a constant whose value is RDBMS. मीन्स वॉट? सब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मैंने कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट क्यों कर दिया है? क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है और उसकी वैल्यू हमेशा RDBMS ही रहेगी. सो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर कांस्टेंट. नाउ प्रोसीडिंग विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक in our conditional statements, and the next topic is while loop. So what is while loop? While loop क्या है? It is a looping structure. लूपिंग स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन लूपिंग स्ट्रक्चर में हमने बेसिक लूपिंग स्ट्रक्चर देखा है, यानी हर लूप को हमें स्टार्ट करना है कीवर्ड लूप से. जो स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे. उसके बाद हमको कंपलसरी क्या लिखना है? एंड लूप. यू हैव टू राइट एंड लूप with for every looping statement. So a loop begins with the keyword loop and ends with the keyword end loop. And how you can stop this loop? By using which value? By using a exit value. By using which clause? Exit when. Exit when and a condition. इसके साथ हमें क्या करना है? कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी. So this is the basic syntax of a loop. But you can use a looping statement directly as we were using in our C program, that is while loop. So while loop के साथ आप condition directly specify कर सकते हो, that is while condition, while there is a condition and condition के बाद क्या लिखना है? loop compulsory keyword, sequence of statements to be repeated and loop. तो यहाँ पर एग्जिट व्हेन आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? वाइल के साथ ही कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है. तो दिस इज द वाइल लूप. एंड नॉर्मल अगर आपको वाइल लूप नहीं लिखना है तो सिंपल आप लूप एंड लूप लिख सकते हो और इसके बीच में आपको कंपलसरी क्या देखना पड़ेगा? एग्जिट व्हेन लिखना ही पड़ेगा. सो द प्रोग्राम, what we are doing over here, we are declaring two variables I and A. We are reading the value of A, and this loop is going to execute for how many times? 10 times, from 1 to 10. Okay, because the initial value of I is 1 and we are reading the value of A. Then this loop is going to execute for 10 times I less than equals to 10 loop dbms underscore output dot put underscore line.
And what this we are doing, this is the very first program of our CPPM, some logical program which we had done in CPPM, and this program is nothing but it is a table of entered number. So इसका output क्या होगा? What will be the output? If I am reading the value of A as 5, then it will display the table of A. Now for loop. For loop क्या है? It is also a iterative statement. It repeats certain statements fixed number of times. Fine. Now while loop is a loop in which you can specify a condition. That means what? You can specify condition, a stopping condition, and the number of repetitions are not known. Then in that case you can use a while loop. For loop can be used when you know the number of repetitions. Now here also for loop is very interesting over here. What is interesting in the for loop? We'll see to it. So for loop में यहाँ पर क्या है? Syntax में for looping counter, keyword in, low value, then what is this? Only 2 dots, not more than 2 dots, and higher value or upper bound. And then as usual, to start the loop you have to write loop keyword, sequence of statements to be repeated, end loop. ये तो आपको लिखना ही है. तो यहाँ पर नया क्या आया? ये काउंटर की वैल्यू को कहाँ सर्च करना है? लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड में सर्च करना है. इसीलिए यहाँ पर लिखा है फॉर लूपिंग काउंटर इन लोअर वैल्यू 2 डॉट्स हायर वैल्यू. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग ओवर हियर एज 2 डैश, ऐसा नहीं लिखना है. हमें क्या लिखना है? 2 डॉट स्पेसिफाई करने हैं. ओके. So here what we are doing, here we are declaring an integer I. Value of I is between 1 to 10, and just we are displaying the value of I from 1 to 10. That means output इसका क्या होगा? 1 से लेके 10 values display हो जाएंगी. So for loop क्या करेगा? Initial value छोटी है, उससे बड़ी value that is upper bound तक वो सारी values को display करेगा. So initial value is smaller as compared to upper value. Normally what does a for loop do? It iterates the loop from lower value to upper value. That means the starting value is suppose 1, then it will iterate from 1 to 10, and the ending value is 10. So the repetitions are in ascending order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But if you don't want such kind of behavior and you want to iterate the loop in reverse order, means आपको अब reverse order में numbers को display करना है 10 से लेके 1 तक. तो आप क्या कर सकते हो? फॉर लूप में नेगेटिव इटरेशंस नहीं देने, आपको सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है. कौन सा कीवर्ड यूज करना है? आपको रिवर्स कीवर्ड यूज करना है. जस्ट यू हैव टू यूज द कीवर्ड रिवर्स. जैसे ही आप रिवर्स कीवर्ड यूज करोगे, आपका ओरेकल क्या करेगा? आपकी लूप को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराएगा. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. नंबर फॉर ए इन रिवर्स ऑर्डर 10 to 20. In reverse, as soon as you write reverse, that means what? Your oracle will run this loop from 20 to 10. It is not going to run the loop from 10 to 20. No negative iterations. You just have to specify the keyword reverse, and what it is going to display? The value of a. So output of this program will be 20, 19, 18, 17 up till 10. So if you want to display the value of numbers in reverse order, then just you have to write the reverse keyword, and reverse keyword is a optional keyword. Now sequential control statement. That means what? You can change the flow of execution depending upon the condition. Depending upon the condition in the sense you have to create a condition, and according to that condition you can change the flow of execution. It is not like that if statement. In the if statement what you're doing, according to the condition a specific part of portion is executed, and if that condition is failing, then other part is executed. But here what we are doing, we are just changing the flow of execution, and if we don't specify any condition, then it will directly jump.
That means it is not necessary to specify a condition to change the flow of statement by using a statement called sequential control, that is goto statement. And along with the goto statement you have to compulsorily specify a label, that means the position where you have to jump. So let's see the syntax. The syntax is begin, label can be anywhere. The label can be above the goto statement or below the goto statement. And how you can specify the label? To specify the label, you have to write the label name within two angular brackets. That means 2 less than sign and 2 greater than sign. And within that you have to specify the name of the label. And then you have to specify goto and the label name. Whatever statements you want to repeat or you want to skip, you can specify them between the label name and the goto statement. Say for example, I am declaring a variable vCount, that is the number, and in the begin section I am counting the total number of jobs, and the jobs are programmer. That means I am trying to find out how many programmers are there. How many programmers are there? I am trying to count. Into which variable? vCount variable. So if there is no programmer in the table, where which table? EMP table, then I am trying to insert a new row. Else that is no row. That means I am not going to insert any new row of a programmer. So if vCount equals to 0, then go to insert row, else null row. Null row means what? I am not going to insert any value and the programmers are abundant in the company. So this is the concept of goto statement, which what I am doing over here, I am specifying the labels. I am specifying the labels. Here the label is insert label, insert row label, and second label कौन सा है यहाँ पर? null row label है. दो labels मैंने specify किए हैं and दोनों labels पे jump कब करवा रहे हैं? vCount की value की depend के ऊपर हम जंप करवा रहे हैं. अगर v काउंट की वैल्यू 0 है यानी एक भी प्रोग्रामर्स नहीं है तो न्यू वैल्यूज इंसर्ट करो. अगर प्रोग्रामर्स हैं, ऑलरेडी 2-4 प्रोग्रामर्स आ गए हैं, तो मुझे कहाँ जंप करना है? नल रो. यानी आई डोंट वांट टू ऐड मोर प्रोग्रामर्स इन द कंपनी.